ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ लीगल डिक्टेशंस। आज हम करने वाले हैं ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट इस मैटर के ऊपर लीगल डिक्टेशंस। ठीक है, सो आई होप यू आर रेडी। विल स्टार्ट द क्लास इमीडिएटली। ओके, आई होप द साउंड इज क्लियर। Okay, I hope. चलो जल्दी से अटेंडेंस लगा दो द स्टूडेंट्स हु हैव केम इन द क्लास। ऑल राइट, लेट अस बिगिन देन, विल नॉट वेट अ लॉट। जो आ गए हैं हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी? Steno School, legal matter at 90 words per minute, 3, 2, 1, start. Shri Sanjay Agrawal, learned counsel appearing for the petitioner, would submit that the petitioner had deposited the entire amount along with interest before issuance of the show cause notice for termination of the petitioner's dealership, stating inter alia that the dishonor of checks had been taking place for a long time and the petitioner continued to lift the product from HPCL depot without taking corrective measures. Sri Agarwal would further submit that the account could not be reconciled due to prolonged illness of the father of the petitioner, as well as for the reason that the petitioner was never informed before 1/8/2009. Sri Agarwal would next submit that clause 55 of the dealership agreement clearly provides that if the dealer for any reason makes default to make payment to the corporation in full or his outstanding beyond 4 days of demand by the corporation shall be at the liberty to terminate the agreement. In the case on hand, the respondent corporation has not given any such notice to remedy any alleged breach of the clause of the agreement within the stipulated period, and even the show cause notice, which was given after deposit of the entire amount, also does not disclose that if there was any breach, the dealer was under obligation to remedy the same within a period of 4 days of the receipt of a written notice from the corporation in that regard. Thus, the act of the respondent corporation is contrary to the provisions of the agreement, unreasonable, arbitrary, and discriminatory. Sri Agarwal would further contend that no cause of action has arisen under the provisions of Negotiable Instrument Act 1881, as Section 138 of the Act prescribes that to constitute an offence, 6 ingredients are required to be fulfilled to say that person who had drawn the checks can be deemed to have committed an offence of the dishonor of checks within the meaning of Section 138 of the Act.
No notice or demand was issued for the payment of dishonor of checks, providing 15 days time as contemplated under section 138 of the act. Per contra, Sri Keshavnath, learned counsel appearing for the respondent corporation, would submit that the impugned order was passed on the ground of violation of clause 55 of the dealership agreement. Sri Keshav would further submit that this petition, filed under Article 226 of the Constitution of India, is to enforce a civil liability arising out of breach of contract to pay the amount due to the respondent corporation, and as such the same is not maintainable on the ground of availability of an alternative remedy in terms of arbitration agreement as per clause 66 of the dealership agreement. The supplies were stopped by the respondent corporation when it was found that there were financial irregularities on the part of the petitioner by not paying the dues. Thereafter, paying back the money does not absolve the petitioner from the wrong committed by it, and the same amounts to violation of the dealership agreement. Full stop. ओके, हाउ वॉज द डिक्टेशन? 93 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में आपको ये बोला गया। और देख लीजिए रेस्पोंडेंट ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। रेस्पोंडेंट कॉर्पोरेशन ऐसे साथ में बोला जाएगा तो एक हाइफन आके देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, रेस्पोंडेंट स्लैश कॉर्पोरेशन, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी और भी कुछ जो पंक्चुएशंस के रूल्स हैं हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी आप लोग फिलहाल सीबीटी पे फोकस कीजिए, उसके बाद में हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सप्लेनेशन सेशंस, ठीक है। नाइस, अच्छे से लिखा गया, ओके, वेरी गुड, ग्रेट। ये डिक्टेशंस आपके मैं आईडीज़ पे अपलोड कर देता हूँ, जिसकी भी स्टूडेंट की आईडी एक्टिव है ऑन द एग्जाम सॉफ्टवेयर, आप लोग वहाँ जाके कोई भी डिक्टेशन लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए। जो भी सबसे बेस्ट आपका डिक्टेशन गया हो, यू फील दिस इज बेस्ट, तो गो अहेड एंड डू द ट्रांसक्रिप्शन एंड जस्ट फॉरगेट इट, ठीक है। आपने ट्रांसक्रिप्शन किया, आपका काम हो गया। स्कोर कम है, ज़्यादा है, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट रिपीट द डिक्टेशंस नाउ, ठीक है। अभी आपको फोकस करना है कहाँ पे, ऑन योर सीबीटी, ठीक है। ऑल राइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आई विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट live class of Monday. Until then, if you want to study Kailash Chandra magazines, रोज सुबह क्लास हो रही है ऑन द एप्लीकेशन, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन अटेंड द लाइव क्लास, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आइए पढ़िए अच्छे से और अपने डिक्टेशंस को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।